भाई मुझे लड़कियां बोलती है मैं सिंगल नहीं हो सकता, मतलब कि वो समझती हैं कि मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे लड़कियों का भरमार है। बट टू बी ऑनेस्ट, उनको अब क्या ही बताऊं। भाई मैं सिंगल हूं, नहीं है कोई लड़की मेरी दोस्त, ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड है। तो आज हम खेलने वाले हैं दोबारा लेटर टू द फ्यूचर। सजेस्ट किया गया कि भाई आप इसको दोबारा पार्ट 2 खेलो, क्योंकि उसका जो मैंने पार्ट 1 बनाया था उसके ऊपर इंडिया से थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो लव यू इंडिया वालों, ऑल्सो पाकिस्तान। लेटर टू द फ्यूचर का पार्ट 2 खेलेंगे, मतलब उसका नेक्स्ट चैप्टर खेलेंगे। तो चलो चलते हैं। और हाँ, कीप इन माइंड मैं सिंगल ही हूँ, मतलब कि कोई लड़की वड़की का ना ही कोई चक्कर है, ना ही कोई सीन है मेरी ज़िंदगी। बट तुम्हारे लिए ऑफ़र खुली है, अगर तुम लड़की हो तो। है बैठ जाओ उसके ऊपर। छोड़ क्यों दिया भाई? भाई मैं चलाना भूल गया हूँ भाई। यार एक मिनट, लास्ट टाइम गेम की वॉल्यूम ज़्यादा थी और इसकी वॉल्यूम कम थी, तो इसकी वॉल्यूम कुछ बढ़ा देते हैं। 100% है भाई। तो क्यों ना मैं कुछ अपनी वॉल्यूम कम कर देता हूँ। भाई ऑसम, ऑसम। ये कंट्रोल माउस से भी होता है। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों में से किन किन लोगों ने ये गेम खेली है या ट्राई की है कि नहीं की, बट आई होप कि तुम लोग इसको करो, खेलो। पबजी वगैरह भी गेम खेलो, बट इसको ट्राई दो। लेकिन जब तुम इसको ट्राई दोगे तो तुम्हारे अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी, एक ऐसी इंस्पिरेशन जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर फोकस करने पे मजबूर करेगी। तो ये गेम बेसिकली I आई थिंक cycled इसी through चीज़ का काम करती है। landscapes, seeing them for the first and last time. I had no idea when I left my home how the season would end, or more importantly, how soon. भाई ऑसम, ऑसम। हर एक जब ये बोलती है ना या बोलता है, आई डोंट इवन नो हु इज, और लड़की या लड़का है। On a cold, damp day, I तो feel यहीं से true हम शुरू कर रहे loneliness हैं। for the first time. Nobody could have described with words how big this world is, how it goes and goes. I passed through it, where others passed before me. हमसे पहले जितने भी आदमी थे, जितने भी इंसान थे, वो गुजर चुके हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, और हम भी मुझे लगता है कि गुजर ही जाएंगे इस दुनिया के अंदर। तो यू शुड एंड आई शुड ट्रैवल दिस वर्ल्ड एंड वॉच दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। तो हमें इसको निकलना चाहिए, देखना चाहिए कि ये कैसी है। भाई जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, पड़े रहते हैं घर के अंदर, भाई नहीं हम तो बाहर नहीं जाते, बाहर तो हादसे हो जाते हैं। अरे हादसे तो तुम्हारे साथ तो घर में बैठे भी हो सकता है, लाइक तुम्हारे ऊपर छत गिर सकती है या ऐसा कुछ भी, तुम्हें बिजली का झटका लग सकता है। निकलो बाहर, एक्सप्लोर करो, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, इसको देखो। मैं वैसे एक बात जानता हूँ, ये जो दुनिया है, मतलब कि काइंड ऑफ विच, जो कि अब ऐसे देखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा ही सज़ा के लिए गया था। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये दुनिया खूबसूरत हो सकती है? हाँ हो सकती है, हर किसी का नज़रिया होता है। अगर हम उस लिहाज से इस दुनिया को चलाएं जिस लिहाज से लाइक इस दुनिया को जीना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। Someone was out here alone. भाई क्या साउंड है इसके! आ हा, वेट वेट वेट, टेक पिक्चर ऑफ। हमें अपनी जर्नल भी तो मतलब कंप्लीट करनी है, क्या करें? ओहो, ये खुद ही उतर गया। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ रखी हुई है तो इनको चेक करते हैं क्या है। आई थिंक ये स्लीपिंग म्यूज़िक है।
आहा, क्या बात है। One melody is like me out here alone. हम्म, I can't really live like this. ठीक They कर लेते हैं kept इसको। themselves company with music. Okay, we should leave. ये देखो, awesome, awesome. इसका नज़ारा है ना, जो नज़ारा देखने वाला है, ब्रेक क्यों नहीं मारती? ठीक है, तो हो सकता है हमें सीज़न के अंदर आगे ये बंदा हमें देखने को मिलेगा। Looks like they made it out of here. But what is this group? ए भाई, जनरल बिल तो भरनी है हमने। इतने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया इसमें। क्या बात है, अमेजिंग। एक तो सर्दियां हैं और मैं इस वाइब को फील कर रहा हूँ दिल से। ओके, यहाँ से जाना है। हम्म, ओह, एब्सोल्युटली इंसेन। इसके ऊपर शॉर्ट्स, रील्स, वीडियोस बन सकती हैं, एस्थेटिक एक वाइब In की। the empty places, I found companionship in the tapes I recorded before leaving home. The elder told me the story of her life. I listened back to it, ready to note down anything that seemed important. ये इसकी ग्रैंडमा है। अब ये वॉइस टेप सुन रहे हो जो कि पास्ट इसकी ग्रैंडमा की है, Let's set the scene for the listener. मतलब वो गुजर चुकी है। अब ये जो बातें तुम्हें बताने वाली है ना, और जो मैं सुनने वाला हूँ इस चीज़ को, ये हमारे लिए पहली बार होगा। मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस जो उसकी ग्रैंडमा ने एक उम्र गुजार के अपने अंदर ऑब्जर्व की है, और वो चीज़ अब हमें देगी। Whoever that might be. This is the elder speaking. We're sitting in the plaza, saying goodbye to a dear soul. We're here to see if there's anything useful in my mind that could help you on your trip. A century's worth of memories, dreams, fantasies, visions. Like a big, old, haunted library. ओह, When I die, this library will burn down. But which book should we check out first? I don't have all the answers, but I do feel the story of my life could help you understand what kind of world is out there. like I told you before, everyone, ये जो ग्रैंडमा है, इसने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इसने जो कुछ सीखा है, तो अब हमें उसकी थोड़ी बहुत हाईलाइट मिलने वाली है। It's मैं उससे पूछ okay रहा हूँ। not to understand everything right away. The moment may pass before you've gotten a firm hold on it. But as long as you're there to witness it, to take it down in your journal, you and others to come will someday take the time to make sense of it all. इसका रियल नाम पूछें या मतलब हिस्ट्री के बारे में पूछें? I heard, somebody told me, you want to capture what it's like to be alive during this season? For the future? And you want to understand why and how the season is going to end. The season of my youth is long gone. But I can tell you what that season was like and what I know about how it ended. Hey, so I think we should ask her real name. Francis Cale, if you must know. ब्रदर, थैंक यू सो मच। तो मेरी चाय आ चुकी है, थैंक यू। You can call me Frank. फ्रैंक नाम है, पर फ्रैंक तो
मेल का नाम है आई थिंक। Or elder? Or the elder? Or Elder Frank? You know, whatever. I don't care. I was born on the ocean. समंदर के ऊपर मतलब कि शायद हो सकता है इसका जो बाप था या हाँ वो मछुआरा होगा या फिर मतलब कि कोई शिप चलाने वाला होगा। और ये जिस जगह के ऊपर बैठी है जरा नोटिस नोटिस करो, ये वो जगह है जो जहाँ से हम निकले हैं, मतलब वो जो एक डॉक्टर फिल है ये उसकी जगह है जहाँ पर इसने बताया कि मैंने लास्ट नाइट यहाँ पे पार्टी की है और अब यहाँ से मैं जा रही हूँ, तो ये वही जगह है। तो इसकी एल्डर्स जो मतलब कि फ्रैंक है ये यहीं की थी, मतलब इसने अपना स्नेरियो मेमोरीज वगैरह यहाँ पे बनाई हुई थी। My mother and father worked on a cruise ship. ए Short-lived but glorious, watery republics. वो शिप टाइटैनिक तो नहीं थी। Floating cities. Most won their independence by the time I was born. How can I describe them? They were a jewel of the golden season. भाई यही चीज़ होती है ना कि आजकल की जो जनरेशन है और जो आजकल का जो माहौल चल रहा है ये बहुत ही ड्रामेटिक और डोमेस्टिक है, लेकिन जो पास्ट का था दैट वाज एपिक एंड क्लियर स्मूथ लाइक सेंसिबल। बहुत अच्छा दौर था पास्ट का, लेकिन आजकल का बहुत ही झंड चल रहा Pleasure है। boats with a radical political program. The golden age was a time of flags, logos, mottos, mastheads. My mom taught me to read them. She was a ship's philosopher. ओ My dad was a recycling engineer. Recycling on the ship was a matter of life and death. We had to get the most out of every object and watt of energy. मॉम के बारे में कुछ बस और कैसे। These symbols and gestures were layered with meaning. There are signals in the way you might move your hands or close your eyes. Her job was to manage the symbols and their meanings. She designed the ship's flag, for example. Let me draw it for you. ओके After the war, people were disgusted with groups and symbols. और वर्ल्ड वॉर टू। Keep an eye out on your trip. I bet you won't see a signal flag flying. Her name was Augusta Kale. I loved the way the ship would tilt and roll with the waves, especially as I fell asleep. And would picture me as a kid in bed, feeling the swaying of the ship. It was like being rocked to sleep as a baby. I loved exploring the ship too, wandering through the suites, the swimming pool, the game rooms, and oh, अब मैं तुम्हारे सामने मतलब ये कोई भड़ास नहीं मारना चाहता कि मैं कोई इंग्लिश पढ़ा लिखा आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन इन दैट तो मैं तुम्हें सब ट्रांसलेट करूँ नहीं, there were two dance halls. खुद समझो। A large, elegant one and another one. And a lot of my firsts were down there. My first dance, my first kiss, and so forth. Sorry, Our ship was taken over in the early days of the war. That was the end of the watery republics. I heard the dance hall in the basement became a weapons cache. Took me Sure. half my life to say goodbye to the world I knew in my youth. Imagine me and my parents and everyone I knew being escorted off the ship by a company of soldiers. And I'm thinking, I hope they don't make a mess of my room. I was embarrassed by the younger kids who were crying their eyes out, but they knew, I guess. सीजन का Yes, पूछते हैं। the start of the war was a turning of season, and we had been warned the season was going to end. Oh, but we didn't understand the warning. You see, one night, along a coastline, we shimmering above the water. Later, we found out this was an ancient warning system. It hadn't been used in so long. We didn't know what it meant. We just thought, well, ain't that pretty? We tried to stick together and camped out on the coast of the prismatic grounds. I thought it was all temporary. I couldn't see how things would return to normal, but I was sure they would.
Aside from that delusion, are you sure you want me to keep going? The story gets darker from here on. No. Let's stop here. That was plenty. I want you All to right. have a safe and beautiful trip. Never feel alone. We'll all be here thinking of you. Thanks, Solder. Let me finish my tea and I will continue again. हाँ पटवारी, मैं स्टूडियो पे हूँ, आजा अगर फ्री है तो। मैं बस गेम खेल रहा हूँ, लेटर टू द फ्यूचर। या आजा फिर, फ्री है तो। ओके, अब हम गेम को करते हैं कंटिन्यू। अगर आपको याद होगा, हमने एक ये बैनर उठाया था, एक ऐसा कार्ड उठाया था हमने पीछे से काफ़ी पहले, तो ये वहीं का है। अब हम एक नए गांव में जा रहे हैं। ओहो, ग्रेट। ये देखो, अमेजिंग। अब ऐसा लग रहा है जैसे ना बस गिने चुने लोग बचे हुए हैं यहाँ पर इस दुनिया में। मतलब या तो ये फ्यूचर है, मतलब ये फ्यूचर में पहले है, सबसे आगे है ये। तो यहाँ पर हर कोई नहीं है। क्या ये डोर खुलेगा? नहीं। अच्छा ठीक है। We never used this kind of technology in my village. Nobody trusted it. एक्चुअली में ये ग्रेड है। इसके नीचे कुछ चैम्बर्स वगैरह लगे हुए हैं जो वो बिजली वगैरह पैदा करते हैं। मतलब कि अब हम ये थोड़ा सा एडवांस आ चुके हैं। ये देखो, ग्रेट, ऑसम। यार देखो, अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है शॉर्ट्स वीडियोस बना, फक माय प्रोनाउंसिएशन। आप लोगों में से अगर कोई भी मतलब कि शॉर्ट्स वीडियोस बनाता है, उसको रील क्रिएट करने आती हैं, तो जस्ट ये मेरी वीडियो उठाओ, उसके ऊपर वीडियोस बनाओ। मतलब मुझे मत दिखाओ भले, बट आप एस्थेटिक वीडियोस बना सकते हैं इसके ऊपर। कोई भी क्वाइट्स या कोई भी शेयर वगैरह चैट जीटीपी से या किसी से भी आप राइट करवा के कंटेंट, तो इसके ऊपर लिख सकते हो, काम कर सकते हो। तो ये हमने पीछे देखा था एक ऐसा चीज़, एक ऐसी चीज़ बोर्ड। अच्छा, पटवारी का मैसेज आ चुका है। Oh, आजा आजा बिस्मिल्लाह। व्हाट? the valley. One second. ए, तो अब ये हमें यहाँ से शायद क्रॉस करने देगा या नहीं, आई डोंट नो। बट यहाँ से देखते हैं कि ये क्या है। तो ठीक है, समझ आ चुके हैं। तो I'm भाई not ये the first to गेट do है। this. Just the first in a long time. Is that a strotofop? What is it? और इज इट, ये रहा। I love old gear like that. It's getting more and more rare. I had a camera, but it broke. Not that interesting of a story. किमें? क्या मैन, जस्ट। What are you doing here? अच्छा, तो अब इसको मैंने बताने कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। अगर मैंने गलत बता दिया तो हो सकता है शायद ये मुझे अंदर अलाउ नहीं करने देगा। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ। It is some moment we got going here, but I don't want to talk your ear off. What kind of stuff are you recording? Okay. Hopeful people and their culture, like yes, Oh yeah, civilization they call it. yeah. The valley would be a good मतलब कि place to vlogger. use those tools. Too bad it's closed down. Let me finish up here, huh?
तो अब ये हमें जाने देगा या नहीं? आई थिंक ये जाने देगा, बट यहाँ से हमें पहले चीज़ें देखनी है कि क्या है। तो हमें यहाँ जाना है। It मैंने ये seems कार्ड like I'll पिक कर have लिया to है। wait for night to enter the shrine. Hey, What? this was like a second home for a while. That was fun earlier when you showed up. And I was carrying the cardboard man. You were like, who are these guys? I've been pretty bored here. You know, the valley's going to be flooded soon. That's why nobody can go in there. अच्छा, हो सकता है शायद यहाँ पर कोई बड़ा कोई फ्लड वगैरह आए, तभी मतलब इस गांव के अंदर ज़्यादा लोग नहीं The हैं। dam is falling apart. सो पूछते हैं कि भाई It's डैम में too मतलब old. क्या हुआ है इसको, तो पुराना है, इस वजह से हो सकता है शायद वो टूट ना जाए। There's nobody left who knows how to repair it. We're taking it down so we'll know when it'll collapse. It gives us time to evacuate everyone. ठीक है भाई, मर गया। Greyhounds. We're a community organization. We Okay. do all kinds of fun stuff. Health clinics, minesweeping, daycare, evacuations, weddings. We're new. Good thing. It was supposed to be because we're helpful yet neutral. We took a vote and decided to change the name, though. We want something more friendly sounding. I'm excited to find out what it will be. बड़ी चाय। शुक्रिया। We're trying to get new things going. But it's hard. The past really has a tight grip on people. Doesn't feel like a fair fight. So we're trying to, well, anyway. ओके, ये बंदा बिल्कुल बोर कर रहा है। It's funny. I stood guard here for a week, and I've only seen greyhounds like myself and valley people on their way out. But now I see you, and you're like a हाँ, new element or something. I've never met anyone doing what you're doing. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। And we greyhounds gotta support new things. So, I'm not supposed to let anyone in. How can I? Jeez. I told you before that कि हमें ये अंदर नहीं जाने देगा, but I think you should go down into the valley and take a look. इसने हमें लॉक कर Gotta दिया। try something here. Dang it. वो फाट मार रहा था, बट साइलेंट था उसका। I was trying to wink. Well, हाँ, अच्छा, you get the idea. आंख मार रहा था वो। Go on and put that old gear to use. You can take my map of the valley too. I don't need it anymore. ठीक है, let's go। I'll be down to pick everyone up around midnight. यहाँ से अब न्यू चैप्टर शुरू हो चुका है। See you then. Okay. अरे यार, हमने इसकी एक पिक्चर लेनी थी, हमने नहीं ली, वो तो मिस कर दिया हमने। शिट। चलो कोई नहीं। I met Ika? a greyhound. He let me into the valley. बट हमने I चीज़ें मिस think कर he दी हैं। wanted me to record what the greyhounds were up to, and he gave me a map. हमारे पास एक मैप है और ये जगह हैं जो हमें मतलब कि जानी है, यहाँ पर विजिट करनी है। The assembly point seemed like a good place to start. At this time, I'm open at sunset. I wonder what he expects me Before to we discover enter, in we the have valley. just take off this entry. The elder said that people were exhausted by symbols after the war. But here are a few hanging. ठीक है, और यहाँ से हमें आई थिंक कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। Okay, I'll think about what kind of visitor I want to be. I think we should leave. Okay. Nobody like us. Unique.
भाई एक तो यहाँ पर भी फॉग, और ये देखो यहाँ पर भी फॉग शुरू हो चुकी है। यार इसको खेलते जाओ, मज़ा आते ही जा रहा है, मतलब कि दिल करता जा रहा है इसको ना मैं आगे देखूं कि ये मतलब आगे क्या होगा। और ये देखो एकदम से मतलब वो चेंज हो गया सारा। अब हम मतलब कि एक माउंटेन से नीचे जा रहे हैं, पहाड़ से नीचे जा रहे हैं हम। लुक एट द व्यू ब्रो, इंसेन। लुक, इट्स लुक्स लाइक अ हेवन। आहा, एक वाइब है, वाइब। मैं कह रहा हूँ इसको यहीं से मेरी वीडियो को मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करो और एक शॉर्ट की वीडियो बना के डाल दो, उसके ऊपर कोई शेर डाल दो या चैट जीपीटी से या कुछ भी करो, शॉर्ट तुम्हारी निकलेगी। सो दिस इज, ब्रेक कैसे मारता है यार। दिस इज द विलेज एंट्री। ठीक है, हम एंटर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। I am probably the last person that will ever be welcomed here by this sign. ये इसने लास्ट क्यों कहा, मुझे समझ नहीं आई। क्या हमारे बाद यहाँ पर कोई नहीं आएगा क्या? तो ठीक है। हम कहाँ पे हैं अभी? पार्किंग एरिया के पास हैं हम। है। और ये अब जो कुछ पढ़ना चाहे तो स्टॉप करके पढ़ सकता है। The elder told me there's very little information about the years before 500. I have wondered about the lives beneath unkept graves. यहाँ पे कोई मुजस्मे होंगे या कोई पत्थर वगैरह जिनके नीचे मतलब ये दफन होंगे, मतलब कब्रिस्तान। समझ आ चुकी है? तो यहाँ पे कब्रिस्तान होगा जिसके पास हमें जाना है। आई गेस यही है। एवरेज फ्लावर, जी I हाँ wonder what the यही है। flowers have to say. तो हाँ ये रही। ओहो, आवाज आ रही है कब्र में से। God of sleep, I've been gathering harpic, and I've been gathering courage. If my big prayer is wrong, if it goes against divine will, please spare the people of this valley. We're so desperate for peace. A memory told over and over again. ये मेरे लिए बहुत ही अजीब था सुनने की। मैं सुन, ये देखो जैसे मतलब मैं के पास आया हूँ तो एक अजीब मतलब वाइब आ रही है। ये देखो, कल भाग यहाँ से। खैर उस कब्र के अंदर जो भी है वो मतलब प्रे कर रहा है अपने मतलब गॉड से, कह रहा है कि इस वैली को दोबारा से आबाद कर दे। तो आई थिंक वी शुड गो, बट बिफोर वी गो वी शुड टेक पिक्चर ऑफ इट। She must have been important to have such an elaborate solitary tomb. अरे यार वो पीछे क्या है? ओह लेट्स गो। ओके, हम निकल पड़े हैं। ओहो, I don't know how to explain it, man.
दिस गेम इज एपिक। नीचे क्या है, चलें? ये स्केच बनाने में बड़े मशहूर है। नहीं बैठ रही यहाँ पर वो प्रिया इज एन। These metal animals are looking up, expectantly. यहाँ से मतलब मच्छियाँ पकड़ते हैं पेट के ऊपर। कहीं जाए वहाँ। ये आवाज़ तो आ रही है किसी की, बट कोई बंदा मुझे दिख नहीं रहा यहाँ। भाई कोई गाड़ी नहीं। अब ये किस चीज़ की आवाज़ है? मतलब कि फ्लड आने वाला है या क्या है? भाई कोई इंसान नहीं है, अगर है भी तो कोई किस्मत से है। कोई साइन है यार? ये गेम इतनी मतलब कि बड़ी यार, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस किस जगह को विज़िट करूं। फ्लड जोन है ये, अच्छा तो यहाँ पर तब फ्लड आ सकता है। आई थिंक इस जगह को मुझे चेक करना चाहिए। हमें एक और मिल चुका है जो कि हम आगे फिल कर सकते हैं, जो कि बाद में करेंगे। There must be a lot of people going to the city if they need to keep track of them with cards. Yep. The Grey Hands want to end this season. ओके 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 ओके। अभी हमें कुछ दिखाएगा हिस्ट्री थोड़ी बहुत। Okay, that's it. They say they're going to build the next season. How? I don't know. The Elder also said low places are dangerous. The city is high up like my village. Maybe it is safer. See. The Grey Hands seem to care what people think about them. It's hard to imagine something new, a new way of living. But they're trying. ये बात भी इसने सही कही है। जब आप एक ऐसी जगह के ऊपर जाते हो जो कि बिल्कुल न्यू होती है आपके लिए, और आसपास के लोग आपको मतलब उस माहौल में एडजस्ट नहीं करने दे रहे होते, लेकिन आप फिर भी कोशिश करते हो। फोन रिंग हो रहा है। Hello? Who's there? स्टूडियो आज जो तुम्हारे लेता हूँ रात को, ठीक है? ओके बाय बाय। मेरी गर्लफ्रेंड थी।
ओके, मजाक कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं प्योर सिंगल हूँ। Oh, तो thank God someone is still down there. I've been trying to get a hold of someone for hours. Ah, thank you. I forgot the day zero material. You know, the visual literature, the worn bath. I left it at the dig site. It should be sitting on a barrel with a fruit sticker on it. Oh, wait. Hold on. I forgot to do the secret password. I don't even know who you are. Is it too late now, you think? Yeah, the locals don't use the telephone anyway. The hermit in the woods is afraid to because she got hit by lightning once. Anyways, thanks for answering. The day zero material is in the dig site. Pretty sure. It should be sitting on a barrel that has a fruit sticker on it. You know, I guess I was going to say but the flood will destroy it anyway. So actually, I was worried for nothing. Everything is lost in a flood. God, we really know what we're doing. I'm excited for this all to be over. I'm excited for this all to begin. Bye-bye now. नो, बट आई एम नॉट एक्साइटेड। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, मैंने फिल करनी थी बट मैंने ये मिस कर दी हैं यार। शिट, मैंने ये मिस कर दी हैं। क्या गया है? कार्ड, मेरा कार्ड हमने उठाया था। और ये रहा एक फार्म, ये भी उठाया था। एक ये रहा हमारा ये। The Greyhands are the future in all its uncertainty, the good and the bad, the hope and fear of progress. The loneliness of this season will be left behind. A collective project is coming. ग्रेट, वेल सेड। व्हाट इज दिस? ये क्या है? और ये देखो, व्हाट इज दिस? अमेजिंग, अमेजिंग। क्या ये बाइक जाएगी ऊपर? बाइसाइकिल। ओके, तो हम काउ फार्म में आ चुके हैं। तो फिलहाल चलो मैं गेम को करता हूँ इसी काउ फार्म के अंदर एंड, और यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम कल, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता। तो यार, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल।